इस योगा महोत्सव में बहुत में तालियां बजा सकते Thank you very much. You can take your seats now. Thank you. On behalf of all studying global university, this is Neeraj Kanaya. It's an honor and pleasure to be here, sharing time and space with such a distinguished audience. Welcome you all on the occasion of Yoga Mahotsav. मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप प्रोग्राम में आ रहे हैं। डिसिप्लिन कमेटी के सदस्यों को भी मेरा अनुरोध है कि ये बहुत से पिछली वाले में बच्चों को देख रहा हूँ अपने मोबाइलों में खोए हुए हैं। We are celebrating a yoga mahotsav here. True yoga is not about the shape of your body, but the shape of your life. Yoga is not to be performed. Yoga is to be lived. Adar, Abhinandan, and Amabhar. My first and foremost duty to welcome. We are here in hybrid system. Some of our guests are online and some of are offline with us. My first and foremost duty to welcome Chief Guest, Professor Dr. Ishwar Baswanagi, Director Morangi Desai National Institute of Yoga, New Delhi. Professor Ganesh Shankar, Head of Department of Yoga Education, Dr. Hari Singh Gaur, Sagar University, MP. Dr. Yashpal Singla, Controller of Examination, Guru Jageshwar University, Sar. Professor B.R. Sharma, Vice Chancellor, Shri University, कटक उड़ीसा वो ऑनलाइन हमारे साथ हैं। श्री उमेश जी प्रदेश अध्यक्ष क्रीड़ा भारती, श्री ईश्वर जी प्रदेश प्रभारी भारत स्वाभिमान, श्री नितेश जिला प्रभारी भारत स्वाभिमान, डॉक्टर नवीन कौशिक गुरु जगेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार और आचार्य वीरेंद्र जी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जी। Our worthy Chancellor, Dr. Punit Goyalji, Pro-Chancellor, Dr. Poonam Goyalji, Vice-Chancellor, Professor Dr. N.P. Kaushik Pro-Vice-Chancellor, Professor Dr. Ajay Padarji, Vice-Chancellor, Professor Dr. Vinod Kumarji, all the Deans, HODs, for academicians, researchers, scholars, dear students, and my dear colleagues from OSU. Yoga is a light which once lit will never dim. The better you practice, the brighter the flame. So in the same manner, greetings and congratulations to the organizing committee of Yoga Mahotsav. All Sterling Global University, School of Yoga and Naturopathy, Dr. N.P. Giriji and Dr. Anil Yonidi and the entire team in association with Morangi Desai National Institute of Yoga under the umbrella of Ministry of Ayush, Government of India, to enhance the commemorated 100 years countdown to International Day of Yoga. और ये बड़ा सौभाग्य का विषय है जब इंटरनेशनल योगा डे यूएनओ में हमारा पारित हुआ था आज से 7 वर्ष पहले, उसी उपलक्ष्य में से ठीक 100 दिन पहले हम ये महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। We strive to achieve excellence in education with the objects to glory. I would like to reveal the journey to become Om Study Global University. It was the year 2008 when OITM was established with a vision of providing quality education to the thriving society of nearby areas. The institute was started with only 2 courses. With the progressive time, OITM was converted into OTI. In year 2019, by the grace and blessings of Master Saraswati, it has taken a big leap and it becomes Om Sterling Global University. It is basically a dream
which has been built by the visionary leaders under the purview of super leadership of global visionary Dr. and educationist Dr. Puneet Goel and source of inspiration Dr. Poonam Goel and other think tanks of Onslow Global University. So please give a big hand to our visionary leaders. Our body exists in the past and our mind exists in the future. But in yoga, they can come together in the present. So let's go for the tribute to Ma Saraswati. I would request to our dignitaries to please escort our guests for the tribute to Ma Saraswati. Glory to you, you are a treasure of good deeds, the goodness of wisdom, language, music, art, and fruits of desire. It is our holy tradition to worship Goddess Saraswati. So I would request all the dignitaries to take the book to Ma Saraswati and place the equal guide and let him collect. Maria Chalita, Abhinav Chalita, Haraya Jayota, Maria Chalita, Abhinav Chalita, Mera तो भाई पूरा Thank you. Yoga is addition of energy, strength, and beauty of the body, mind and soul. इसी एडिशन के लिए फॉर्मली स्कूल ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट की तरफ से मैं आमंत्रित कर रहा हूं उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर अनिल योगी जी। धन्यवाद नीरज सर। योग महोत्सव 2022 के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पुण्य आत्माओं को मेरा प्रणाम। आप सब जानते ही हैं योग 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और आयुष मंत्रालय के तहत मुरारजी देसाई योग संस्थान के सहयोग से इस वर्ष इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर योग महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है। योग महोत्सव कोई कार्यक्रम नहीं है, दरअसल यह एक अभियान है जो 100 दिनों तक 100 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। यह अभियान 21 जून 2022 तक चलेगा, जो एक जलधारा के रूप से परिवर्तित होते हुए विशाल गंगा का रूप ले रहा है और 100 स्थानों पर यह कार्यक्रम इन 100 दिनों में किया जा रहा है, जिसमें से हम यानी ओम स्टडी ग्लोबल यूनिवर्सिटी अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि जो इस नेक और पवित्र कार्य के लिए इस महोत्सव का हिस्सा बने। आयुष मंत्रालय के द्वारा योग महोत्सव की शुरुआत
योग और इसकी उपयोगिता का प्रचार करने के उद्देश्य से की गई। इस अभियान द्वारा स्वास्थ्य कल्याण और विश्व शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के 100 दिनों के उल्टी गिनती अभियान को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इस 100 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाले कुछ कार्यक्रम में योग कार्यक्रम, योग प्रदर्शन, योग सेमिनार, योग कार्यशालाएं, जो कि ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों मोड में चल रही है। इस आयोजन के दौरान फोटो प्रतियोगिता, योग विषय पर चर्चा, प्रश्न उत्तर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के साथ ऐसे कार्यक्रमों के लिए सदैव ही तैयार रहती है और ओएसयू परिवार के सभी सदस्य समाज कल्याण, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम, योग अभियान जैसे कार्यक्रम के लिए सदैव ही कुशल सैनिकों की भांति तैयार रहते हैं। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी की तरफ से मैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आगे भी योग प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार प्रसार के लिए ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी सदैव तत्पर है। धन्यवाद। आज जैसा कि आप बाहर एग्जीबिशन देख के आए, मेरा सभी डिसिप्लिन चार्जेस से रोज एक बार सेटल डाउन कर दीजिए। सभी बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो गई है। As a tradition of home study global university, I would request to VC sir, PVC sir to please give a plan to our guests. जैसा कि आज अर्थ देवी और एक ट्रेडिशन है, विश्वास सर प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड डॉक्टर यशपाल सिंह मोदी, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन कमिश्नर यूनिवर्सिटी साहब, जो गिरी सेंटर में रिक्वेस्ट है आ रही है प्लीज। श्री उमेश जी, प्रदेश अध्यक्ष। ठीक है, श्री उमेश जी, प्रदेश अध्यक्ष क्रिया भारती, दो तालियां। डॉक्टर नवीन कौशिक जी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार। आचार्य वीरेंद्र जी, योगी जी जीकेयू से, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से आप भी आमंत्रित हैं सर। योगी जी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से। Thank you very much, all of you. Please, you can take your seats. अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं विधिवत स्वागत के लिए हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर प्रोफेसर डॉक्टर एन.पी. कौशिक जी। उनका तारुफ मैं थोड़ा सा आपको दे दूं। ये आईआईटी पीएचडी फ्रॉम आईआईटी रुड़की जियो टेक्निकल से, और उससे पहले वो फॉर्मर वाइस चांसलर रहे हैं राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। 35 वर्ष का उनका एकेडमिक्स का एक्सपीरियंस है। एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और प्राइड ऑफ राजस्थान। सो प्लीज वेलकम आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर सर।
आज के योग महोत्सव कार्यक्रम के विशेष अतिथि माननीय श्री उमेश जी, यशपाल सिंघा जी और बीजेयू से पधारे हमारे अतिथिगण, हमारे फैकल्टी मेंबर्स और छात्र छात्राओं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हमारे लिए एक बहुत हर्ष का विषय है कि आज विश्वविद्यालय में हम जो है एक साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं और उसमें ये योग महोत्सव भी शामिल है। आज सुबह हमने जो है अर्थ डे सेलिब्रेट किया और योग महोत्सव की जो है अंतिम कड़ी हम जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। योग महोत्सव का उद्देश्य ये है कि जन जन तक ये संदेश पहुंचा सके कि योग के माध्यम से हम स्वस्थ रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं और समृद्ध बन सकते हैं और इससे ही एक स्वस्थ समाज जो है वो निर्माण होगा। योग का सरल अर्थों में अगर हम देखें तो अर्थ है जोड़ना। तो बेसिकली योग से हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को अपने से जोड़ने का प्रयास करें। आपको हो सकता है ये सेंटेंस थोड़ा सा अटपटा लगे, लेकिन जो योग के एक्सपर्ट हैं मेरे ख्याल से वो जानते हैं कि पहली कड़ी ये है कि अपने आप को अपने से जोड़ना। और योग के जो 8 आयाम है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि, अगर हम इन 8 आयामों को जो है पूर्ण करते हैं तो हम जो है परम शक्ति ईश्वर के साथ हम अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो अगर हम ये देखेंगे कि योग की शुरुआत जो है स्वयं से जोड़ने से लेकर स्वयं को परमात्मा तक ले जाने का एक साधन है। आज का कार्यक्रम हमारे लिए बहुत विशेष है। मेरे से पूर्व नीरज तनेजा जी ने और एचओडी योगा अनिल योगी जी ने बताया कि ये जो कार्यक्रम है 21 जून 2022 को जो इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा उसकी पूर्व तैयारियों का एक कार्यक्रम है। इस साल आयुष मंत्रालय और मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, या यह कहें कि हमारी केंद्रीय सरकार ने ये निर्धारित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले 100 दिन लगातार कार्यक्रम चलेंगे और इसकी जो थीम है 100 days, 100 institutions and 100 places। अब आप ये सोच सकते हैं कि पूरे भारत में 100 डेज तो ठीक है, कोई डेट डिसाइड हो जाएगी, जैसे आज हमारी डेट 22 अप्रैल डिसाइड हुई है, लेकिन 100 प्लेसेस एंड 100 इंस्टीट्यूशंस, तो इसमें ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी का स्थान पाना और हमारे शहर हिसार का उन 100 स्थानों में स्थान पाना वास्तव में एक गर्व की बात है और हमारे लिए एक बहुत प्रसन्नता का विषय है। ये बात जो है मेरे से पूर्व तनेजा जी ने भी बताई और डॉक्टर योगी जी ने भी बताई, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों ने इस बात को विशेष ध्यान नहीं दिया। अगर हम गर्व करते हैं तो वास्तव में आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिए,
और अपनी शहर के लिए जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। कई बार अगर वक्ता जो है उसके शब्दों को ऑडियंस सुन नहीं पा रही है तो हमें विशेष रूप से आग्रह करना पड़ता है। और अगर आप लोगों ने कभी सम्मेलन सुने हैं तो उसमें तो निश्चित रूप से ये आग्रह होता ही होता है। लेकिन निश्चित रूप से इन 100 प्लेस एंड 100 इंस्टीट्यूशन ओएसयू का आना और हिसार का आना हमारे लिए गर्व की बात। आज जो हमारे योगा कार्यक्रमों की जो शुरुआत की गई थी वो योगा कैंप से की गई थी और हिसार में सेक्टर 14 आप सब लोग जानते होंगे, वहां पार्क में ये कार्यक्रम किया गया और हिसार के जो आम लोग हैं उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। तो बेसिकली इन कार्यक्रमों का उद्देश्य ये है कि जन भागीदारी को योग के साथ में जोड़ा जाए, उसको बढ़ाया जाए। और इसका जो एक हिस्सा था हमारे आज योग महोत्सव का, उसको हमने सुबह 6 से 8 तक जो है सफलतापूर्वक संचालित किया। मेरे को इस कार्यक्रम के स्वागत भाषण की जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए मैं योग पे जो है ज्यादा नहीं बोलूंगा। और इस योग महोत्सव के साथ में योग से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी हस्तियां जो है वो हमारे साथ हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रोत्साहित करने में जो है जुड़ रहे हैं। आज के कार्यक्रम के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो प्रोफेसर बी आर शर्मा जी हैं और आप श्री श्री यूनिवर्सिटी ओडिशा के कुलपति हैं। आपका मार्गदर्शन हमें ऑनलाइन मिलेगा। मैं माननीय श्री प्रोफेसर बी आर शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और साथ ही उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार किया। हमारे सामने विराजमान आज के कार्यक्रम में विशेष अतिथि श्री उमेश जी, जो कि क्रीड़ा भारती के हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हैं, आज हमको आशीर्वचन देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। सर, आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आपका हृदय से आभार कि आप हमारे कार्यक्रमों में पहले भी जुड़े रहे हैं और आज भी आप जो है हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। आज हमारे साथ में जीजेयू के कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर यशपाल सिंघा जी भी उपस्थित हैं। उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि क्योंकि पूर्व में हमारे छात्र जो है वो जीजेयू से जुड़े हुए रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारा संबंध आज फिर और आगे बढ़ेगा। हमारे कुछ अतिथि आज के विषय पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए ऑनलाइन जुड़ेंगे। इनमें प्रोफेसर ईश्वर बसवा रेड्डी जी, मुरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा दिल्ली से जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर गणेश शंकर जी, जो कि योगा के विभागाध्यक्ष हैं, हरि सिंह बोर्ड यूनिवर्सिटी सागर से हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे। और सी के मिश्रा जी, जो कि नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पटियाला के अंदर हैं, वो भी हमारे साथ में जो है ऑनलाइन जुड़ेंगे। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इसके साथ ही श्री ईश आर्य जी, भारत स्वाभिमान, श्री मुकेश जी, जिला प्रभारी भारत स्वाभिमान, तो हमारे सुबह के कार्यक्रम में
उपस्थित थे, डॉक्टर नवीन कौशिक जी, आचार्य वीरेंद्र जी और जीन से हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और हमारे छात्रों और हमारे फैकल्टी मेंबर्स को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ लोगों ने अपने संदेश जो है वो भेजे हैं। इनमें विशेष रूप से डॉक्टर डीपी शर्मा, जो पीएम के स्वच्छता अभियान के एम्बेसडर हैं, उन्होंने यूएसए से अपना मैसेज भेजा है। डॉक्टर प्रशांत जामवाल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कजाकिस्तान में है, उन्होंने भी अपना मैसेज जो है हमारे लिए भेजा है। प्रोफेसर एच.डी. चारण, जो नेशनल ह्यूमन कमेटी ऑफ नेशनल ह्यूमन वैल्यू कमेटी ऑफ एआईसीटी के चेयरमैन हैं और बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के फाउंडर वीसी हैं, उन्होंने भी अपने संदेश जो है इस कार्यक्रम के लिए भेजा है। इस कार्यक्रम में आप लोग भी उपस्थित हैं और आपकी बिना उपस्थिति के इस कार्यक्रम की सफलता जो है संभव नहीं है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। विशेष रूप से हमारे प्रो वीसी अजय पोद्दार जी, डॉक्टर धीमन जी, डॉक्टर महेंद्र जी, रजिस्ट्रार साहब और सभी डीन्स जो यहाँ उपस्थित हैं और सभी फैकल्टी मेंबर्स और छात्र उपस्थित हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कार्यक्रम है योगा महोत्सव, इसकी रूपरेखा केवल 2 दिन पहले तैयार हुई थी। यानी कि 20 अप्रैल को हमें एक ये ग्रीन सिग्नल मिला था कि आपको योगा महोत्सव आयोजित करना है। जैसा कि योगी जी ने भी बताया आपको, ये आयुष मंत्रालय और मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा से प्रायोजित कार्यक्रम है। तो इस बहुत कम समय में हमारे जो डीन योगा हैं, डॉक्टर एम.टी. गिरी जी, डॉक्टर अनिल योगी जी, नीरज तनेजा जी और उनके साथ जितने भी टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं, उन्होंने सबने मिलकर तैयारी की और इसके जो योगा महोत्सव के 3 कार्यक्रम है, योगा कैंप, योगा वर्कशॉप और नेशनल सेमिनार, और आप देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम के साथ में काफी लोग जो है जुड़े हैं। तो जी को, तनेजा जी को और इनके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। इसके साथ ही सुबह जो है अर्थ डे का कार्यक्रम किया गया। उस कार्यक्रम में भी मतलब 3 हिस्से हम समझते हैं। पहला प्लांटेशन का था, उसके बाद वेबिनार का था और तीसरा ये आपका एग्जीबिशन का था। तो इस कार्यक्रम को भी बहुत सफलतापूर्वक आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए डॉक्टर बीमा दीक्षित जी, विकास बिश्नोई जी और उनके साथ में जितने भी टीम मेंबर्स हैं और विशेष रूप से जो छात्र जिन्होंने प्लांटेशन में भी सहयोग किया और विशेष रूप से यहाँ पे मॉडल्स बनाए, पोस्टर्स बनाए और अर्थ डे को जो है पूरा सार्थक साकार किया, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अंत में मैं
यही कहना चाहूंगा कि हम प्रयास करते रहें और इसी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, हमेशा हमारे मार्गदर्शन के लिए, हमेशा गाइडेंस के लिए और एक्यूरेट गाइडेंस के लिए थैंक यू वेरी मच सर। I always said true yoga is not about the shape of your body, but the shape of your life. Yoga is not to be performed, yoga is to be lived. तो इसी योगा को जीने हमारे स्कूल ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी के स्टूडेंट्स आपके समक्ष कुछ प्रस्तुतियां योगा को लेकर पेश कर रहे हैं। प्लीज वेलकम स्कूल ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी। ये जो स्टूडेंट्स अपने मोबाइलों में मशगूल है, उनसे मेरा निवेदन है कि अपने साथियों का तालियां बजाकर हौसला अफजाई करें।
Thank you very much, students. Now, I request Professor Dr. Ishwar Acharya जी, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा से जो ऑनलाइन हमें अपना मार्गदर्शन देंगे। प्रोफेसर डॉक्टर ईश्वर आचार्य जी। Am I audible to you, sir? C.K. Missionary from NIS Patiala, National Institute of Sports. If my voice is audible to C.K. Missionary. हाय सर, नमस्कार सर। Yes, sir. नमस्कार जी। हाय सर, नमस्कार। Namaskar, sir. You are requested to speak on this yoga Mahotsav. You are welcome here at Mahotsav Global University. आज जैसे आप सभी को पता है कि योग आज के टाइम में फुल फ्लैश स्पोर्ट्स है। एक तो थोड़ी काफी डिस्टर्बेंस हो रही है। तो योगा बेसिकली एक हम कह सकते हैं कम से कम 10 कंट्रीज है जिसमें स्पोर्ट्स किया। सर आप सुन पा रहे हैं सर? डॉक्टर साहब, डॉक्टर गिरी जी। बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। जैसे हम सभी को पता है कि योगा एक पूरे डिसिप्लिन स्पोर्ट्स का है और 2020 में भारत सरकार ने इसको स्पोर्ट्स की मान्यता दी, जबकि इंडिया से पहले सऊदी अरब ने 2016 में योगा को स्पोर्ट्स माना। और योगा बहुत एकदम पॉपुलर हो रहा है अभी, क्योंकि योगा के अंदर बेसिकली वेलनेस एक पार्ट है, दूसरा स्पोर्ट्स पार्ट है। देखिए स्पोर्ट्स पार्ट क्या करता है, हमें यूथ से जोड़ने के लिए इफेक्टिव है। हमें जितना हमारा युवा लोग हैं वो स्पोर्ट्स के माध्यम से, और स्पोर्ट्स में ट्रेडिशनल योगासन है, आर्टिस्टिक है, रिदमिक है, ठीक है, इनके माध्यम से यूथ को हम जोड़ रहे हैं और यूथ बड़ा इफेक्टिव है और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। अभी खेलो इंडिया के अंदर भी योग आ गया। अभी अब देखें लेटेस्टली ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया में योगासन कंपटीशन है, इसका यूथ खेलो इंडिया है। तो योग बड़ा जल्दी पॉपुलर हो रहा है और बड़ा इफेक्टिव भी है। हमें चाहिए कि हम बच्चों को योग के प्रति जागरूक करें, उनको लेकर आए एज ए स्पोर्ट्स के रूप में, अदरवाइज वेलनेस के रूप में। अगर बच्चे योग करेंगे तो उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बैलेंस रहेंगे, किसी भी फील्ड में काम करें योग इफेक्टिव है। अभी लेटेस्ट NIS पटियाला से एक योग स्पोर्ट्स में प्लेसमेंट हुई है, कह सकते हैं। तो उसमें 8 लाख में मंथली 96 लाख की साल का एक पैकेज हमारे एक स्टूडेंट को अभी मिला सऊदी अरब से। तो योगा की डिमांड दिन बाय दिन बढ़ रही है। देखिएगा
तो योग एक जीवन का माध्यम है, जीवन जीने की कला है। तो हम जैसे योग सीखेंगे समझ लो जीना सीखे। तो योग को और बढ़ावा देना है, हमें लोगों को जोड़ना है, चाहे वो वेलनेस के माध्यम से, चाहे वो योगासन स्पोर्ट्स के माध्यम से है। तो हमें स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है और आने वाले टाइम में योगा स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन बनने जा रहा है, बन चुका है। बच्चे पूरे वर्ल्ड वाइज कई कंट्रीज के लोग हमसे NIS पटियाला से जुड़े हुए हैं, हमसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। और अभी हमने 15 कंट्रीज के लोगों को ट्रेनिंग दी है योगासन स्पोर्ट्स की, कि हम कैसे योगा को स्पोर्ट्स जो आसनाज हैं, एडवांस आसनाज हैं, चाहे वो आर्टिस्टिक योग है, चाहे वो रिदमिक योग है, चाहे योगा वेलनेस के रूप में है, चाहे योगा थेरेपी के रूप में, हम कैसे हेल्प करेंगे, कैसे इंजरी को ठीक करेंगे। तो अभी 15 कंट्रियों को हमने अभी योग की ट्रेनिंग दी, बड़े इफेक्ट और बड़े अच्छे रिजल्ट्स को सामने आए। तो योगा बड़ा इफेक्टिव पार्ट है, इसको हमें प्रमोट करना चाहिए, आम बच्चों तक सभी को जोड़ना चाहिए, चाहे योगासन प्रैक्टिकल के माध्यम से, चाहे कोई और माध्यम लेकर। तो योगा का बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड वाइज है। और हम देख रहे हैं गिरी साहब ने तो बहुत टाइम से हमने साथ काम भी किया है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज में। अब उसमें भी काफी चेंज हो गया, देखिएगा वक्त के हिसाब से काफी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो हम देखने को मिलेगा। तो योगा का बड़ा अच्छा इम्पैक्ट हमारे यूथ के ऊपर है और इसके अंदर कई पार्ट्स हैं। देखिएगा मैं NIS पटियाला में नेशनल कैंपर्स हमारे हैं, चाहे हमारे नीरज चोपड़ा जी रहे या जितने भी ओलंपिक के एथलीट्स हैं, उनको योग की हेल्प दी, उनके इंजरी प्रिवेंशन में, उनके गेम को इंक्रीज करने में, परफॉर्मेंस को बढ़ाने में योग ने बड़ा अच्छा योगदान किया, हेल्प की हमने। तो योगा हेल्प करता है जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उसको इंक्रीज करने में। इसमें त्राटक क्रिया है जो बड़ी हेल्प करती है मेंटल रिलैक्सेशन के लिए, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मेडिटेशन है, प्राणायाम है, क्रियाज मुद्रा बंद है। तो योग तो बहुत अल्टीमेट है, खासकर स्पोर्ट्स के लिए। कोई भी स्पोर्ट्स है, कोई भी इवेंट है, हर इवेंट में हर स्पोर्ट्स को योग के माध्यम से हम आगे बढ़ाते हैं, उस बच्चे के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, मेंटल लेवल इंक्रीज करते हैं, और जो उसकी इंजरीज हो रही हैं उसको हील अप करने में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। तो योग बहुत इफेक्टिव है और इसको हमें जोड़ना चाहिए, लोगों को इसमें लेके आना चाहिए। यूनिवर्सिटी की विशेषकर जिम्मेदारियां होती हैं कि जो बच्चे हमारे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के प्लेयर हैं, किसी भी गेम के हैं, उनको योग कराएं, जोड़ें और अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करें। और इस प्रकार के सेमिनार है ऐसे होते रहने चाहिए, जिससे जागरूकता बनी रहती है। तो मैं डॉक्टर गिरी साहब का धन्यवाद करता हूं, जो मौका मिला मेरे को दिया इतने बड़े मंच पर बोलने के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। गिरी साहब भी अपना रिटर्न में थैंक यू कर रहे हैं। मैं एग्री करूंगा कि 150 कंट्रीज में जब से यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल योगा डे को एडमिट किया था, योगा एज ए सिलेबस एक्सेप्ट हुआ है और स्पोर्ट्स या किसी भी चीज में एक्सेप्ट करने के लिए योगा का बहुत बड़ा योगदान है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे प्रोफेसर डॉक्टर ईश्वर आचार्य जी, जो मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा से न्यू दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओवर टू आचार्य जी। The voice option is mute. Please unmute it. Dr. Acharya. Yeah. Good evening to everyone. At the outset, I would like to congratulate the university for organizing this unique program, 100 days, 100 cities
and 100 organizations as part of the countdown program to International Day of Yoga 2022. Since the beginning of the celebration of International Day of Yoga from 2015, though the announcement or the declaration was made in 2014, the actual celebration, the first International Day of Yoga celebration was started in 2015. Since then, across the country, across the globe, people are involving themselves in the participation of various programs being organized by planned by the Ministry of Ayush and other government organizations, and most of the organizations are coming forward voluntarily to conduct befitting programs related to Yoga Day and its celebration. You are all aware that the celebration is picking up its momentum across the globe. If you may be surprised to know that in the last year, though it was on the both hybrid mode, physical and the online, more than 15 crore people across the globe have participated in the celebration of the International Day of Yoga. As we all know, the yoga popularity of yoga is growing day by day. In our country, the importance or the interest or encouragement for the traditional medicine is since from the centuries. There is a growing awareness among the scientific community and the general public about the intrinsic value of the traditional medicine. These systems have entered the mainstream medical care or in the contemporary society. The challenge today is to integrate the best of the different healing traditions to meet the healthcare needs of the contemporary society. If you take the non-communicable diseases like diabetes, hypertension, bronchial asthma, arthritis, so on and so forth. So there is hardly any medicine or the management system in the modern medical modern medicine system, though it is advanced to a greater extent. In many of the such cases, the traditional systems of medicine, especially the yoga, comes forth and helps in the management, both though it is the prevention, management, and rehabilitation also. All the more, the yoga helps in the promotion of the positive health. We find immense references about the well-being of the human being in our various texts. Vasudhaiva Kutumbakam is the mantra of the Indians, which means the entire world is a family. That is our culture. Sarve bhavantu sukhinaha, sarve santu niramaya. That is our daily prayer. We always aspire for loka samasta sukhino bhavantu. The prayer itself indicates the intention or the motto of the Indians for the larger community or the world community or the society. The post-independence, the government of India made several efforts to promote and popularize the Indian systems of medicine, so much so that as on date, it is having an independent ministry to deal with these systems. Thanks to our Honorable Prime Minister, who is taking very much interest in the promotion of the Ayush system, especially yoga. In the last few decades, there has been growing interest in the alternative forms of therapy globally. People across the globe not only visit India as a tourist, but also reap the benefits of the traditional systems of medicine for their various health needs. Recently, I think Honorable Prime Minister has announced that there will be a Ayush visa to be issued for the people across the globe who are interested to study the Ayush systems, especially yoga in our country. So probably this is going to be a big leap, big
these things, big achievement we can say, or it is going to be a landmark decision by the government to promote the systems of Indian medicine, including yoga. As we all know, India has become one of the most sought medical tourism countries as on date. Yoga is a form of mind-body fitness that involves a combination of muscular activity and an internally directed mindful focus on awareness of the self, the breath, and the energy. There are four basic principles which underlie the teachings and practices of yoga as a healing system. The first and the foremost is the principle is the human body is a holistic entity comprised of various interrelated dimensions, inseparable from one another, and the health or the illness of any one dimension affects the other dimension. That shows the holistic approach of the yoga system. The second principle is individuals and their needs are unique and therefore must be approached in a way that acknowledges this individuality, and their practice must be tailored accordingly. So we cannot generalize the system of yoga, or the especially when it comes to the therapeutical aspect, we cannot generalize that particular group of practices can be useful or is useful in the entire group of for example, diabetic cases. We cannot say. The third principle of yoga is self-empowering. The sadhak, his or her own healer. The yoga engages the sadhak in the healing process. By playing an active role in their journey towards the health, the healing comes from within instead of from an outside source, and a greater sense of autonomy is achieved. The fourth principle is that the quality and state of an individual mind is crucial to healing. When the individual has a positive mind state, healing happens more quickly, whereas if the mind state is negative, healing may be prolonged or hampered. As I already told, yoga is recognized as a form of mind-body medicine that integrates an individual's physical, mental, and spiritual components to improve aspects of health, particularly stress-related illnesses and the non-communicable diseases. Viewed as a holistic stress management technique, yoga is a form of complementary and alternative medicine that produces a physiological sequence of events in the body, reducing the stress response that we all know. The scientific study of yoga has increased substantially in the recent years, and many clinical trials have been designed to assess the therapeutic effects and benefits. Regular practice of yoga promotes strength, endurance, flexibility, and facilitates the characteristics of friendliness, compassion, and greater self-control, while cultivating a sense of calmness and the well-beingness. Sustained practice also leads to important outcomes such as changes in the life perspective, self-awareness, and an improved sense of energy to live life fully and with a genuine enjoyment. The practice of yoga produces a physiological state opposite to that of the fight or flight stress response, and with that interruption in the stress response, a sense of balance and union between the mind and body can be achieved easily. Yogic practices enhances muscular strength and flexibility, promote and improve respiratory and the cardiovascular function, promotes recovery from and treatment of addiction, reduces stress, anxiety, depression, and chronic pain, improves sleep patterns, and enhances the overall well-being and the quality of life. As we all know, we have undergone the bad effects of the corona. As the country battles the COVID-19 pandemic on a war footing, India's traditional system of yoga has been established as a means to boost immunity, improve overall health and well-being. Lack of proper sleep, poor nutrition, and leading to a stressful life all lead to a weakened immune system and vulnerability to sickness. Here, the role of yoga comes into action, where it improves the sleep pattern
and which further enhances the immunity of the person. Once the immunity of the person improves, obviously there is hardly any chance of getting infected or uh, getting affected by any of the disease condition. The system of yoga can be a better preventive and healing tool besides promotive and the rehabilitative method. If it is adopted by the people on regular basis, there will be a less chance that we spend on medical expenses. With this background only, the system of yoga or the yoga is being promoted across the country, across the globe, and International Day of Yoga is an opportunity to uh, get into the system of yoga, to adopt. It's an opportunity for adopt yoga in one's life, so that there will be a better lifestyle, better life, and happiness and enjoyment in the life. The Yogotsava, which has been started in the 13th March as a countdown to IDY for 100 days, this is gaining momentum, and gradually people are involving themselves voluntarily in every part of the country, along with the organizations and the experts of the system of yoga. I once again congratulate the university authorities, Honorable Vice Chancellor, the Dean of the School of Yoga and Naturopathy, is Dr. Giri sir, the experts from different parts of the country, and today's chief guest, Dr. B.R. Sharma, and all who are involved in making this program a successful one. I also extend my heartfelt thanks to the university for giving us an opportunity to be part of this particular program and to speak few words in front of the August gatherings. Thank you very much. For your blessings. And now I would like to request हमारे साथ जो अभी आपने बच्चों का जो डेमोन्स्ट्रेशन, थैंक यू वेरी मच। जो बच्चों का डेमोन्स्ट्रेशन देखा था वो हमारे स्कूल ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट से राकेश सर, देवेंद्र सर और प्रभात सर ने करवाया था, और बड़ी खुशी की बात है कि उनके आचार्य बजाने जी ताले बंदों से उनके डॉक्टर आचार्य डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार जी हमारे बीच में, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपने आशीर्वाद रूपी शब्दों के साथ में आप सभी मान और पवित्र आत्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ। आइए सर्वप्रथम एक बार परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। कमर गर्दन सीधी करेंगे, नासिका से सांस लेते हुए मुख का एक बार ओम का जाप करेंगे। माननीय कुलपति महोदय, मुख्य शिक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय, माननीय उमेश जी, नवीन जी, मानव जी, अनिल योगी जी, राकेश जी, अन्य महान आत्माओं, मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, आप सभी मेरे से हैं, मैं तो गांव का सामान्य से जुड़ा हुआ बच्चा हूँ। मैं आज तक ये बात नहीं समझ पाया कि योग कहाँ उपयोगी है या किस रोग की ओर से योग नहीं। भारतीय ऋषि परंपरा में स्वास्थ्य की परिभाषा आचार्य सुश्रुत जी ने दी, जो बहुत ही वैज्ञानिक है। WHO अनेकों बार सुधार किए, अब वही भाषा WHO भी उधर ही आ रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो समग्र संपूर्ण स्वास्थ्य की जो विलासा है, उसकी अगर प्राप्ति की जा सकती है तो भारतीय जीवन पद्धति से की जा सकती है। मैं इसलिए नहीं कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ,
मैं इसलिए भी नहीं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भारतीय जीवन पद्धति है, जो ये हिंदू धर्म की जो ये धारा है, ये बड़ी वैज्ञानिक है, तथ्यपरक है। और आधुनिक युग में कल परसों में रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, जो ये कह रहा कि जो भारतीय व्यंजन है, भारतीय थाली है, भारतीय आहार है, सात्विक आहार है, अगर हम इसको लेते हैं तो हमारी आयु 13 साल बढ़ जाती है। साइंटिफिक रिसर्च है, हमारी नहीं है, योग की है। हम आजकल हमारी ऐसी मानसिकता की जो योग से आता वो अच्छा है, ऐसी मानसिकता है। मैं आचार्य सुश्रुत जी की परिभाषा दोहरा रहा हूँ। सम दोष है, सम अग्निश है, सम धातु, सम नल क्रिया, प्रश्न आत्म मन इंद्रिय। सम दोष है बात के तब जिसके सम है, सम अग्निश है सप्त धातु में रस रक्त मांस समेत अस्थि मज्जा सोलह, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। सम नल क्रिया आप मेरे पास कहते मूत्र है, पुरुष है, शरीर है, सम अवस्था में। अगली बात पे मैं आता हूँ, पर्सन आत्म मन इंद्रिय। जिसकी आत्मा पर्सन है, आत्मा को पसंद करने के लिए क्या कोई टेबलेट दुनिया में हो सकती है? मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ ये कह देना चाहता हूँ कि दुनिया के सभी वैज्ञानिक मिलकर कोई ऐसा इंजेक्शन इजाद करते, कोई टेबलेट इजाद करते कि टेबलेट खा लें और आप पर्सन रहेंगे। इंद्रियां मॉडर्न साइंस कहते हैं कि जिसकी आंखें 6/6 है वो ठीक है, लेकिन बाकी ऋषि कहता कि आंखें तो ठीक है लेकिन देखता क्या है? आंखों से हम कितना बोलते हैं, कितना अनावश्यक रूप से या क्रूर रूप से या अव्यवहारिक रूप से या वासना की दृष्टि से आंखों से क्या देखते हैं, ये बड़ी बात है। कान है, मॉडर्न साइंस कहते हैं जिसको सुनाई देना चाहिए, फ्रीक्वेंसी इसमें सुनाई देता तो ठीक है, लेकिन इसे कहता क्षमता क्या है भाई? बहुत सारे व्यक्ति जब तक कुछ इधर से उधर उधर से इधर नहीं करते तो नींद नहीं आती। जीवा का मॉडर्न साइंस कहती है कि आपको बोलते हो तो आपकी जीवा ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप बोलते हो क्या है भाई? मायने रखता है ये चीज, आप कैसे बोलते हैं। मॉडर्न साइंस कहती है कि ये हाथ अगर ये ऐसे हो रहे तो ये ठीक है, लेकिन योग कहता है ये हाथ कहाँ जा रहे हैं, किसी की सर्जरी भी कर सकते हो, किसी की हत्या भी कर सकते हैं। दूसरी बात, आज पृथ्वी दिवस में मनाया जा रहा है, बड़ा अभी सोचा कि हमारी माँ पृथ्वी बीमार पड़ गई। पंजाब में एक एरिया है, उसमें बाउंड्री लगा दी गई है कि आप इस केव में मत जाइए, अगर आप इस केव में जाएंगे तो कैंसर से ग्रसित हो जाएंगे। जो व्यक्ति या हिरोशिमा नागासाकी हमने देखी है, भावनाएं बन गई। और इसका सीधा सा समाधान है कि अपने ग्रह की भावना। हमारे किसी हमारे पूर्वज, मैं हरिद्वार का पढ़ने के लिए मेरे बैग में आज भी मैं अपने किसी छात्र को बता रहा था, जो दो कुत्ता पजामा थे, एक धो लेता था एक पहन लेता। सामान्य से जितने मेरी यूनिवर्सिटी की फीस होती थी उससे ज्यादा कभी खर्चा होता नहीं था। कई बार इसी तक पैदल चले जाते थे, कई बार बरौलिया तक पैदल चले जाते थे, हरिद्वार से पैदल आ जाते थे, पैदल चले जाते। दूसरी बात है, आजकल जेलेंस्की का बड़ी चर्चा है, बाइडेन की बड़ी चर्चा है। जेलेंस्की कह रहा कि ये जो युद्ध है, पुतिन का जो इलाज है वो बाइडेन है। मैं कहता हूँ युद्ध का कोई इलाज हथियार नहीं होता, समस्त समस्याओं का समाधान अध्यात्म में है। कभी भी इस ग्रह पर, इस पृथ्वी पर, इस धरा पर शांति आएगी तो अध्यात्म से आएगी, अन्यथा कभी भी नहीं आएगी। परमाणु ठीक अपनी सुरक्षा के लिए हमने भी परमाणु बनाए, परमाणुओं से कभी शांति आने वाली नहीं है। कभी भी आप यही देख लो, दुनिया का दिमाग खराब हो गया है। हमारे ब्रेन मिसाइल बन गई है, किसी को छेड़ते तो देखो, आप बात को करते देखो, सार्वजनिक यात्राएं करते हैं, चलते चलते बसों में झगड़ रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका सिर्फ इतना ही कारण है
कि हम अपने दातन से दूर होके। मैं एक बात और हमेशा कहता हूँ और आपके बीच में रखना चाहता हूँ, शिक्षा वही है जो संस्कार युक्त मानव का निर्माण करे। हमने अपने बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में भेज दिए साहब, लेकिन बच्चे जो हैं वो क्या संस्कार युक्त है? कई बार आरोप लगता है कि हमने शिक्षा का भगवाकरण कर दिया, कोई कहता है शिक्षा का ये कर दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि शिक्षा का आप यौगिकीकरण कीजिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, योग किसके लिए? कोई कहता है जी बुढ़ापे में करेंगे, कोई कहता है बीमार होगा तब करेंगे, कोई कहता है मेरी हाइट बिगड़ रही तो तब करेंगे, कोई कहता है मोटापा कम करना तब करेंगे, कोई कहता है कोलेस्ट्रॉल कम करना तब करेंगे। मैं अक्सर कहता हूँ माँ बाप बनना एक विज्ञान है, एक साइंस है। आप एक अच्छी आत्मा चाहते हैं, आप एक अच्छा पुत्र चाहते हैं, पुत्री चाहते हैं, करिए योग करो। जन्म से पूर्व योग, और जब जाए इस तरह से हंसते हुए सबको खुशी से इस देह को त्याग दे, यानी कि मृत्यु तक आपका साथ देता, जन्म से पूर्व और मृत्यु तक आप ये योग साथ देता। मैं तो 5 सा गांव का बालक हूँ, आप सभी ने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना। मैं आचार्य वीरेंद्र कुमार आप सभी महान व पवित्र आत्माओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आपके आशीर्वादी शब्दों के लिए। और आपसे गुजारिश है कि समय समय पर आप अपने शिष्यों को भी संभालते रहिएगा। Now I would invite online Professor Ganesh Shankari, Head of Department of Yoga Education, Hari Singh Gold, Southern University, MP. Professor Ganesh Shankari. हाँ जी नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? क्या आप मेरे को सुन सकते हैं? हेलो हाँ जी। सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद करता हूं कि मेरे को उन्होंने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया अपने कुछ विचार रखने के लिए। ये जो कार्यक्रम है, जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया, ईश्वराचार्य जी ने और ऑर्गेनाइजर्स ने, कि ये एक काउंटडाउन प्रोग्राम चल रहा है इंटरनेशनल योगा डे को अच्छी तरीके से मनाने के लिए। उससे पूर्व ये 100 शहरों में और 100 ऑर्गेनाइजर्स द्वारा 100 दिन तक ये 13 तारीख से 13 मार्च से कार्यक्रम चल रहा है। और इसके लिए आयुष मंत्रालय, भारत सरकार प्रयत्न कर रही है कि इस बार का जो योग डे का कार्यक्रम है, 2 वर्ष कोरोना पीरियड के बाद ये जो ऑफलाइन में कार्यक्रम हो, ये बड़े जोर शोर से होना चाहिए। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्यों होना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि कोरोना काल में दुनिया में अधिकतर लोग डिप्रेशन में या मानसिक परेशानियों में रहे हैं, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं जो कि कोरोना काल से पहले थी, और कोरोना काल आने के बाद में आप देख रहे हैं परिस्थितियां बहुत चेंज आ गई। तो योग के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इसको मनाया जाता है, योग दिवस को मनाया जाता है। और ये प्रतिवर्ष 2015 से मनाया जा रहा है, क्योंकि 2014 में इसको यूएनओ में पास किया गया था योग डे के रूप में, और 2015 से, और इसको न केवल
स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, बल्कि जनमानस, पूरा जनमानस, पूरी दुनिया इसको बड़े धूमधाम से मनाती है। और केवल मनाती ही नहीं है, मन से भी इसका अभ्यास करती है। और मैं तो ये कहूँगा केवल ये 1 दिन का कार्यक्रम या 100 दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये एक्चुअली जागरूकता पैदा करने के लिए है। ये अभ्यास तो जीवन पर्यंत करने की आवश्यकता है, यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं और या पूर्ण रूप से आनंद और सुखपूर्वक जिंदगी जीना चाहते हैं। जैसा कि ये विश्वविद्यालयों में इसको काफी लोकप्रियता मिली है और कई विश्वविद्यालय इसको आजकल मना भी रहे हैं और बहुत सारे कोर्सेज भी चला रहे हैं, जैसे कि ओम यूनिवर्सिटी जो इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है, यहाँ पर मास्टर डिग्री, पीएचडी डिग्री और सर्टिफिकेट, डिप्लोमा आदि ये यहाँ पर संचालित किए जाते हैं और बहुत रुचि आजकल लोगों में पैदा हो गई है। उसके पीछे यही कारण है कि या तो योग को आजकल काफी इसकी लोकप्रियता के कारण इसको प्रोफेशन के रूप में अपनाना चाहते हैं, या इसको इसको अपनाकर अपने जीवन पर्यंत स्वास्थ्य को बनाना चाहते हैं। और स्वास्थ्य में भी 3 बातें प्रमुख रूप से होती हैं। जैसे आप यदि अभ्यास करते हैं तो आपको कोई रोग नहीं होगा या कम होगा या उसकी इंटेंसिटी कम होगी, यदि आप योग के सिद्धांतों के अनुसार उसको अपनाते हैं और उसका अभ्यास करते हैं। और दूसरी बात, यदि कोई रोग हो भी जाता है किसी कारणवश, खान-पान के कारण, वातावरण के कारण या इम्यूनिटी के कम होने के कारण, तो आप इसमें अभ्यास करके एक प्रॉपर टीचर के निर्देशन में आप अभ्यास करके उसको किसी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं और आप उन बीमारियों से, बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा भी पा सकते हैं। कई बार ये बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है, कई बार 100% फायदा हो जाता है, कई बार 50% होता है, कई बार 20% होता है, कई बार बिल्कुल भी नहीं होता है। यदि उसमें घबराने की या परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें पेशेंस या टाइम कंज्यूमिंग ये अब योग का अभ्यास होता है। इसमें ये बहुत सारी बातें डिपेंड करती हैं कि ये रोग कितना लेवल पर है आपका। यदि 90% या 95% के करीब पहुंच चुका है तो उसमें बहुत कम उम्मीद होती है कि उस रोग में योग मदद करे। लेकिन यदि 50% तक किसी रोग में यदि कोई अभ्यासी करता है 50% रोग में, तो उसको हम नीचे बैक ला सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है इसमें स्वास्थ्य से रिलेटेड बात जो है, उसमें आप ये देखेंगे कि इम्यून सिस्टम को या आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में योग मदद करता है। आप कोई भी प्रोफेशन में हैं, कोई भी कार्य करते हैं, चाहे आप शिक्षक हैं, चाहे आप विद्यार्थी हैं, आप अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। चाहे अभी आप 2 घंटे काम करते हैं, 5 घंटे काम कर सकते हैं, तो आप धीरे-धीरे उस आवर्स को आप बढ़ा सकते हैं यदि आप योग का अभ्यास करते हैं। योग में केवल आसन प्राणायाम ही नहीं है, इसमें आचार व्यवहार और व्यायाम और सब बातें इंक्लूडेड होती हैं। होलिस्टिक अप्रोच योग की अपनानी चाहिए, ना केवल आसन को ही आप सोचें कि यही योग है या प्राणायाम ही योग है या ध्यान की अभ्यास। आपको जीवन में अपना आचरण भी सुधारना होगा, ठीक करना होगा, आपको अनुशासित जीवन जीना होगा, आपको दिनचर्या को आपको अनुशासित बनाना होगा। अष्टांग योग का आप यदि आप देखते हैं, उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि की बात कही गई है। इसमें ये सारी चीजें जो हैं एक होलिस्टिक अप्रोच के रूप में दिखाई देती हैं। उसमें शौच संतोष की भी बात कही है, अहिंसा, सत्य, सोशल हाइजीन की भी बात कही है, पर्सनल हाइजीन की भी बात कही है, आसन की भी बात कही है, प्राणायाम की भी बात कही है। तो एक होलिस्टिक अप्रोच, इसमें व्यवहार भी आपका होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। तो इस तरह का यदि आप होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं योग की, तो आप होलिस्टिक हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं, आप एक होलिस्टिक पर्सनैलिटी का विकसित कर सकते हैं। तो इसी प्रकार इस प्रकार योग यदि आप अभ्यास करेंगे, सिद्धांतों को अपना कर करेंगे, तो निश्चित रूप से ये जो योग का अभियान है पूरे विश्व में और ज्यादा प्रचलित होगा, अधिक से अधिक लोग करेंगे और रिसर्चेज ने भी बहुत ज्यादा प्रूव कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। और इस प्रकार वो
योग को अपना रहे हैं जीवन पर, और इसी प्रकार यदि आप अभ्यास करते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये जो एक हमारे वेदों में कहावत है, तो इस तरह के उसको आप पूर्ण प्राप्त कर सकते हैं। सभी सुखी रहें, सभी निरामय रहें, सभी कुशल मंगल रहें, सभी खुश रहें, यही कामना के साथ ये योग दिवस मनाया जाता है। और योग दिवस पे ये जो 100 दिन का काउंटडाउन चल रहा है, इसके लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और निश्चित रूप से इनका जो कार्यक्रम है बड़ा ही सराहनीय है। और इसमें आचार्य जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं, थेरेपी से रिलेटेड भी बताई हैं। सभी वक्ता अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन आवश्यकता तो ये है, ये प्रैक्टिकल साइंस है, अनुभव आधारित चीज है, इसको करके ही देखना होगा, करके अनुभव करना होगा, तभी आप इसका पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आयोजकों को मेरे को आमंत्रित करने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद। Request us your message and ask please. Please, Bhagwan, please. मैं प्रोफेसर एच.डी. चारण, चेयरमैन नेशनल कमेटी ऑन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ AICT दिल्ली एवं फाउंडर वाइस चांसलर बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। मुझे ज्ञात हुआ है कि ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी हिसार 100 डेज़ योगा 100 ऑर्गेनाइजेशन उसमें शामिल हुआ है। मैं उनको इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय को अपने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के माध्यम से समाज तक पहुंचाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। योगा हमारी परंपरा है, और इस पीढ़ियों की परंपरा के माध्यम से हम अपने आप को न सिर्फ तन को, लेकिन तन और मन में सामंजस्य बिठाते हुए किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं और समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए इस योगा दिवस पे मैं आपको और इस कार्य के लिए हिसार यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस पुनीत कार्य को अपने हाथ में लिया है। बहुत बहुत बधाई। I'm Dr. Megha Goswami, working as a classified specialist in neurology department in Artemis Hospital, Gurgaon, and I'm very happy to know that Om Sterling Global University, Hisar, is organizing a national seminar on yoga for health, happiness, and well-being. I am so enlightened to know that they are doing so much in yoga and all the important part which is playing a role in our daily activities, specifically in our mental health, physical health, and yes, the pranayams, the asanas, the meditations, these are the bliss of life. So I am really glad that this university is doing a superb job on their work. I congratulate to Puneet Goyalji, to Dr. Poonam Goyalji, and Dr. N.P. Kaushik, the Pro-Chancellor, the Registrar, especially to Dr. N.P. Giri, Dean, School of Yoga and Naturopathy, who are promoting Indian yoga culture among the students and the society. It has come to my notice that Om Sterling Global University is the only university in North India, as well as in whole India, who is offering all the undergraduates and post-graduations, MPhils and PhD courses in yoga under the supervision of the esteemed Dr. N.P. Giri and Dr. Kashyap and other qualified staff. So again, good wishes to all the faculty and the management for organizing the yoga ceremony, along with that for the students and the society. Thank you so much. Have a great day. Dear all,
Let me first introduce myself. My name is Dr. Prashant Jamwal, and I was graduated from IIT Roorkee and then from University of Auckland in New Zealand. Presently, I'm working as professor at the Nazarbayev University, which is an international university of Kazakhstan. Apart from teaching in the School of Engineering, I'm also conducting research whereby I'm trying to develop Kazakhstan's first nanosatellite, build medical robots here, and also trying to develop an AC/DC smart microgrid. Dear ones, I'm delighted to know that Sterling Global University in Hisar is organizing a national seminar on yoga for health, happiness, and well-being. As we all understand, yoga is imbibed into our ancient Indian culture, and these days people around the globe, they're taking interest to adopt and promote yoga for their all-around development, such as physical health, mental health, and well-being. Our ancient seers and sages have also proclaimed time and again that practicing yoga, it is possible to achieve all the four goals or aims of human life, which are dharma, means moral values, artha, which means prosperity, kama, which means desires, and the moksha, which means self-realization. So one should gradually climb the ladder of yoga through its 8 limbs, which are yam, niyam, asana, pranayam, pratyahar, dharana, dhyan, and then try to attain into samadhi towards the end of his life or her life. This is heartening and reassuring to know that Sterling Global University is the only university in India that offers courses in yoga, leading to the UG, PG, MPhil, and PhD programs. Now, I wish to, towards the end, congratulate Dr. Puneet Goyalji, who is the Chancellor, Dr. Mrs. Poonam Goyalji, the Pro-Chancellor, Dr. N.P. Kaushik, who is the Vice Chancellor and my close friend, all faculty and management, Dr. N.P. Giri, who is the Dean of School of Yoga and Naturopathy, for promoting Indian yoga culture among the students and the society at large. Thank you very much. Namaskar. Good morning, everyone. My name is D.P. Sharma. I'm professor, but professionally computer scientist and digital diplomat, and working for several international organizations. I am pleased to learn that Sterling Global University, Hisar, Haryana, has a plan to organize a national seminar on yoga for health, happiness, and well-being for individuals in the society at large. As far as my observation, opinion, and experience is concerned, Indian yoga is a true convergence of spirituality, divinity, and the science. As we all know that yoga is originated from India, Bharat. It can also be called as traditional yoga. Historically, ancestry as the main difference between the Indian yoga and the Western yoga. Indian yoga focuses on sacred practices having union with the absolute God, Almighty, the real manifestation of the God Ishwar Mahakal for the long-term sustainability of the life. However, the Western yoga, on the other hand, is quite contemporary or customized, contextualized, and localized version of original yoga that was invented in India. It's a matter of great pride for all of us. The thousands of universities and the colleges across the world, including Europe and America, are now adopting yoga so as to make their life useful, meaningful, purposeful, and fruitful. Indeed, I personally admire the initiative of Sterling Global University. It is the true essence of making the life of students, staff, and stakeholders healthy, happy, and cool. Rather than talking, writing, speaking like me, we must adapt.
practice the yoga. Recently, I came to know that OM Sterling Global University is one of the universities in northern part of India which is offering the undergraduate, postgraduate, MPhil, PhD level degree programs in yoga itself. It's admirable. I really appreciate this iconic step and express my gratitude to Dr. Punit Goel, Chancellor of the University, Dr. Poonam Goel, Pro-Chancellor of the University, and a special thanks to my friend and elderly guide, Professor Dr. N.P. Kaushik, the Vice Chancellor of the University, for connecting me to this iconic university and its program. Dear all professors, researchers, and the management fellows, your contribution and commitment to the society is historical. Congratulations and good luck. Thank you. Now I would request to our chief guest of the event, Professor Dr. B.R. Sharma, Vice Chancellor, Sri Sri University, Cuttack, Odisha. I'm quite fortunate to call you, invite you on this occasion, sir. Over to Professor Dr. B.R. Sharma. Thank you very much. Honorable Chancellor Shri Puneet Ji Goel, Pro-Chancellor Dr. Mrs. Poonam Goel, Honorable Vice Chancellor Dr. N.P. Kaushik Ji, my friend Dr. Ganesh Shankar Ji, the Dean Faculty of Education, Sagar University, the Registrar, and C.K. Mishra Ji, Anil Yogi Ji, Guest of Honor Dr. Jashpal Singla Ji, Pro Vice Chancellor Dr. Ajay Podar Ji, and all the dignitaries and participants, the student friends. At the outset, let me congratulate the organizers for choosing this topic of yoga for health, happiness, and well-being. Coming directly to the topic, we must know what this health is, what this happiness is, and what this well-being is. Friends, health, in the beginning, one of the speakers said, our culture, our tradition does not divide man in watertight compartments. It considers man as a whole, encompassing body, mind, and spirit. We all know this body, mind, both, they are originated from the nature. We used to call it Prakriti. But the mind part plays a very, very important role, because it can participate not only with the body, but at the same time with the spirit also. So it is between the body as well as the... So if it is connected to the body as bodily aspects and the phenomena associated with it, then it may take you to the endless misery and pain. So ill health, in other words. And if the mind is connected to the upper part, then you can live a meaningful life, healthy life. The most important, and therefore in our scripture it is said, maneva manushyanam karanam bandha moksho. Mind can bind you and mind can liberate you. Today, if we dive a little deep into the society, I think that all will be agreed that in spite of the various advancements in the medical science and technology, we all are losing our access of balance and harmony at all levels. And the conventional methods, they are falling short. Therefore, there is a need of this traditional science, which is
now established that it not only helps us in maintaining the physical aspect, the mental aspect, but our holistic health, So therefore, this yoga plays a very, very important, as beautifully said by Dr. Ganesh Shankar ji, that it is not only the asana and pranayam, but there is a approach. That approach is to be understood properly. I think that in the seminar, most of the students are also there. For them, I would like to say a few words. Dear friends, it is not only we have to understand what this health is. So, keeping that in mind, we have to understand the root, the center. That is what, and our scripture does not say that this does not believe in piecemeal approach. Therefore, we have to opt this. So illness is not as it is understood by the conventional methods. It is a what you call somewhere or other. There is a problem in our manomaya kosha or vijnanamaya kosha, and therefore there is a problem. When your mind is disturbed, automatically your breathing will be disturbed, and once this breathing is disturbed, the whole system will be disturbed. Therefore, we have to take care of this mind, and that is the reason why Maharishi Patanjali and all others, even though when in Bhagavad Gita, Chanchalam hi mana Krishna pramathi balbadridam tasyaham nigrah manne vayu ribsa dushkaram. This is what Arjuna says, the great warriors. He says that whatever you say, it is correct, but my mind is not listening, and Lord Krishna himself accepts. No doubt about it. Whatever you said, you are correct. Mind is so fickle in nature. So, but abhyasentu kaunteya vairagyena griyate. Only through the regular practice, and you have to develop what is required to you, and you have to analyze that. And whatever the activity you are doing in day-to-day life, why you are doing this, where you are going to reach with the activity which you are. So, with a view to maintain the health, the yoga gives you the two-pronged approach. And that approach is, first of all, you have to learn to cleanse the body, For that, we have a system established by our yogis in the form of Shat Kriyas, even though each and every practice of yoga is helping you to eliminate the impurities which are there. And once the impurities are eliminated in one hand, on the other hand, there is a light of wisdom. And in that light of wisdom, you can understand where I am and what I am doing. And so long we are unable to do so. So this is the one approach that we have to learn to eliminate the impurities which are set within our system. So therefore, Shat Kriyas are there. Even Maharishi Patanjali in the 28th Sutra of the second chapter, Yoganga Anushtanat, Ashuddhi Kshay. Ashuddhi means impurities. All impurities are eliminated, then only what you call this Gyandipti, there will be a wisdom. And in the light of that wisdom, you will be able to understand Kimartham kriyate kriya. Why you are doing this, you will be. And the second is the nourishment of this body. Say, for example, Dr. Ganesh Shankar ji has said, not only asana pranayam, but at the same time, we have to take care of the ahar, bihar, and other things also. Ahar. And that is the reason why in Bhagavad Gita, beautifully it is said, yukta ahar viharasya, yukta cheshtasya karmasu, yukta swapnabodhasya yogo bhakti dukha. So all these things are to be. The time is very short because the organizers has given me only the 5 minutes and I have completed. If there is some question of the students, that can be answered. Otherwise, thank you very much once again to the organizers, and especially to our friend Dr. Narayan Dutt Giriji for inviting me for this talk. Thank you very much. Thank you once again. Thank you very much, Mahotsav. And
and really sorry for inconvenience as far as timing is concerned. I hope you won't mind this. So now it's time for felicitation. I would request to our honorable VC sir and other dignitaries to come over the stage and please present the memento to our esteemed guests. सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आचार्य वीरेंद्र जी. Really, it's pleasure and honor आप यहाँ पे हैं. बड़ा ही सौभाग्य का विषय है. आचार्य वीरेंद्र जी, मैं तभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका memento हमेशा बात में रहिए. यशपाल सिंघा जी, विवेक सिंह, प्रवीण कौशिक जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज. प्रवीण कौशिक. Thank you. अप्रूव कर दें. Take one. 22 02 बस Thank you very much already. You will take your seats. मैं मेरे हिसाब से रिक्वेस्ट करूंगा कि संक्षिप्त शायद में बड़ा देर ना बोलना, संक्षिप्त सा वो थैंक्स कर दीजिए. Honorable Vice Chancellor and other dignitaries in the main hall. First of all, as you know, I have given the opportunity to give the thanks to all responsible persons of the seminar and Yoga Mahotsav. First of all, I would like to thanks to our Honorable Chancellor, Sir, Dr. Puneet Goyalji, Pro-Chancellor Madam Dr. Poonam Goyalji, Chancellors, Vice Chancellor Sir Dr. N.P. Kaushik, and other authorities of this university who gave us full freedom to organize this national seminar on yoga for health, happiness, and well-being. Secondly, I am very thankful to Dr. Ishwar Paswagati and his team, Marathi Desai National Institute of Yoga, and Ayush Ministry, New Delhi, who sanctioned our university, that is Om Kali Global University, for organizing the yoga seminar for health, happiness, and well-being. We organized these three functions here. First, yoga practical session for the promotion of yoga among the students and society. Dr. Ishwar Pasaradi also sent the grant of rupees 1.5 lakh for this yoga Mahotsav. I, on the behalf of Om Kali Global University, thanks to him and his team. I'm especially thankful to our chief guest who agreed to be a chief guest in this seminar, this seminar. I'm also thankful to Dr. Isabedi and Nitish Kumarji who give their valuable time for practical session in the morning at 6 a.m. to 8 a.m. मैं धन्यवाद
करना चाहूंगा जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए फोटोग्राफी, स्टेज डेकोरेशन, रिफ्रेशमेंट, ट्रांसपोर्ट आदि के लिए कार्य किया। उन्होंने तहे दिल से अपना कार्यक्रम में अपना इच्छा जताई और अपना कार्य अच्छे से किया। इस कार्यक्रम के लिए जो विभिन्न कमेटियां बनी थी जिसमें रूप से कार्य करने के लिए मैं वो धन्यवाद की बात है। अंत में जिन्होंने डायरेक्टली व इनडायरेक्टली इस कार्यक्रम में कार्य किया है मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। In the last, I am thankful to our anchor Dr. Neeraj Taneja ji, Dr. Yogi ji, and SYN staff to make this conference success. Thank you very much. Thank you very much, sir. So thanks all the volunteers.